Hello to everyone. Welcome back to my channel. Today's topic is assumed mean method. तो हम आज mean find out करेंगे by using the assumed mean method. So let us start. So first we discuss the formula of assumed mean method. हम फार्मूला क्या यूज करेंगे assumed mean method में x bar is equals to a plus summation of fi di divide by summation of fi. तो यहाँ पे जो वैल्यू है जो डिवाइड कर रहा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट ओनली डिवाइड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ fi di. Majority of students जो मिस्टेक करते हैं they do like this that a plus summation of fi di divide by whole term that is summation of fi. So this formula is totally wrong. जो आपका divide होगा summation of fi that is only with the summation of fi di. So here a is your assumed mean and di is your xi minus a. xi क्या है आपकी x values और a हमने क्या लिया है assumed mean. तो how we are going to proceed this method in the question? Let us take an example to understand. Here the question is consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. We have to find the mean daily wages of the workers of the factory. So these are the daily wages, that is the range, right? 100 to 120, that is your class interval. And what is the range? That is 100 is minimum value and maximum is your 200. So range is your 200 minus 100, that is 100. So this one is your class interval and this one is number of worker is your frequency. xi फाइंड आउट करना सीखा था इन अ सेम मैनर जो हमने डायरेक्ट मेथड में सीखा है, दैट इज योर मिड पॉइंट. तो फाइंड आउट कैसे करते हैं हम मिड पॉइंट? दैट इज योर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. दिस वन इज योर अपर लिमिट एंड दिस वन इज योर लोअर लिमिट. तो अपर एंड लोअर आपकी क्या होगा इस क्लास इंटरवल के लिए 100 plus 120 divide by 2. So that is 220 by 2, 110. Similarly, 120 plus 140 divide by 2. So it will be your 260. So 260 का half क्या हो जाएगा? 130. Now 140 plus 160 divide by 2. 300 by 2, that is 150. Similarly, the next is 170 and 190. So this one is your xi values. Now, as we discussed, the assumed mean method formula is x bar a plus summation of fi di divide by summation of fi. नो fi तो हमारे पास है. ओके अब हमने फाइंड आउट करना है di. तो di का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सो di फॉर्मूला इज xi माइनस a. तो उसके लिए फर्स्ट वी शुड नो a वैल्यू. अब a क्या है आपका? दैट इज assumed mean. a क्या है? दैट इज योर assumed mean. तो assumed mean कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी आर गोइंग टू काउंट टोटल नंबर ऑफ दीज वैल्यूज. हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5. 5 एक्सरसाइज वैल्यूज हैं. अगर आपके पास वैल्यूज क्या है? ऑड हैं, तो हमारी जो मिड वैल्यू होगी, मिडल वैल्यू, वी ऑलवेज टेक दैट एज अ assumed वैल्यू. अगर हमारे पास इवन वैल्यूज हैं, सपोज हमारे पास क्या होती? टोटल 6 वैल्यूज होती, तो 6 का हाफ क्या हो जाता है आपके पास? 3. ओके, सो आइदर थर्ड और फोर्थ, ये आपको क्या देती? मिडल वैल्यूज.
तो हम उसके अकॉर्डिंग यूज करते. सो वी कैन टेक आइदर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म एज अ अज्यूम्ड मीन. अब यहाँ पे ओड वैल्यूज है, तो ओड वैल्यूज की मिडिल वैल्यू क्या बनी हमारे पास 115. So 150 we are going to take as a assumed value. अब di इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास xi माइनस a क्या है 150. सो हमारे पास di वैल्यूज कैसे बनेंगी, xi इज 110 माइनस 150. तो इनका जो डिफरेंस आया क्या हो गया हमारे पास -40. The next value 130 minus 150. So difference is -20. The next is 150 minus 150, that is equals to 0. So these are your xi values. xi value में से हमने अपनी assumed value की deviation ली, that is the difference. Now next is 170 minus 150. So value is positive. And last is 190 minus 150, that is 40. In the next हमारे पास क्या है, summation of fi into di. Means we are going to multiply fi value and the di value. तो हमारे पास di वैल्यूज क्या है -40 और fi वैल्यू इज 12. So 12 into -40 is 480. Similarly, now we are going to multiply 14 into -20. So 14 into -20 is -280. Now 0 into 8 is 0. 20 into 6 is 120. 10 into 40 is 400. So इस चीज का ध्यान रखना है कि we are just going to multiply fi with di. fi और di को मल्टीप्लाई करना है हमने, fi और di को. Majority of students क्या मिस्टेक करते हैं, they multiply di with xi. Okay, हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को di के साथ. So now in the formula we are going to take summation. Required is summation. So we are going to find the sum. Means we are going to add all these values. तो अगर हम ऐड करें ये सभी वैल्यूज, अगर हम ऐड करें ये सारी वैल्यूज तो क्या आता है हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -240. तो a क्या वैल्यू ली थी हमने, a इज 150 प्लस समेशन इज -240 एंड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 50. अगर आप ऐड करोगे फ्रीक्वेंसी तो ये क्या होगी आपके पास 50. ओके, सो डिवाइड बाय 50. तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सो 240 डिवाइड बाय 50 इज 4.8. अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया आपका. नाउ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वैल्यू को फ्रॉम 150. सो आपका जो आंसर है दैट इज 145. So that is your mean using the assumed mean method. Right? So let us take one more example to understand this assumed mean method. Now you can see in this question 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. So find the mean heartbeats per minute for these women. So now these values are your class interval and this one is your frequency. Now same way we are going to find, first we are going to find its midpoint, that is your xi values. और xi values क्या है, upper limit plus the
lower limit divide by 2, and then we are going to find di, that is xi minus a. And last हम क्या करेंगे, we are going to multiply fy into di. Now first we are going to write xi values. तो xi values क्या है हमारे पास, 65 plus 68 divide by 2. तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 66.5. अनदर इजी मेथड क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द क्लास साइज. क्लास साइज क्या है हमारे पास, क्लास साइज इज द डिफरेंस ऑफ द इंटरवल. इसको हम डिनोट करते हैं h के साथ. सो 68 minus 63 is your 3, right? 71 minus 68 is 3. तो 3 का अगर हाफ करें 1.5, ओके, और ऐड कर दें लोअर लिमिट में, सो 68 plus 1.5 it will be 69.5. और अगर आप चेक करो ये सेम वैल्यू देगा अपर लिमिट प्लस lower limit divide by 2, that is 69.5. Similarly, you can apply 71 plus 1.5, that is 72.5. So जो भी आपको method easy लगे to find xi, the midpoint value, you can apply. So 74 plus 1.5 is 75.5. The next will be 78.5. And next is 81.5 and 84. So these are your xi values. अब di वैल्यू क्या होगी, xi माइनस a. तो xi वैल्यू क्या है हमारे पास, ईच केस में 66.5, then next is 69.5. a, अब a क्या होगा, we are going to count the total observations. तो कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7. तो अगेन हमारे पास क्या है, ऑड वैल्यूज हैं. तो अगर ऑड वैल्यूज हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 7 plus 1 by 2. तो कौन सी वैल्यू आई है आपके पास, दी फोर्थ. तो फोर्थ वैल्यू जो है आपके पास 75.5, that will be your assumed value. So this one is your assumed value. तो a क्या हो गया हमारे पास, 75.5. 66.5 minus 75.5, इसका डिफरेंस क्या है हमारे पास, that is equals to -9. Now similarly 69.5 minus 75.5, इसका डिफरेंस is -6. Now next is 72.5 minus 75.5 is -3. Now next is 75 minus 75.5 is 0. ऐसे ही we are going to find all these values. तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3 and 81.5 minus 75.5 is 6. Then 84.5 minus 75.5 is equals to 9. अब हमने क्या करना है, we are just going to multiply 2 into minus 9 minus 18, 4 into minus 6 minus 24 minus 9 0, 7 into 3 21, 4 into 6 again 64, 9 into 2 is 18. So we are going to add these values. तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, +12. तो ये वैल्यू आ गई. नाउ वी नो द फार्मूला ऑफ अज्यूम्ड मीन. तो अज्यूम्ड मीन का फार्मूला क्या है, x bar is equals to a plus summation of fy di by summation of fy. तो हमारे पास सभी वैल्यूज हैं अभी. a is your 75.5 plus summation of fy di is 12. Now summation of fy is given to you, that is total number of female patients are 30. So this one is your 30. So 12 divided by 30 is 0.4 और आंसर आ जाएगा आपका 75.9. So that is the mean heartbeats per minute for these women. That's all about assumed mean method.
If you understand this topic, then like, share my video and subscribe my channel. Thank you so much.